to Bangalore temple, it was so dirty. The rats were running across the balustrades. It took me 4 or 5 times going there. Finally, Radha Swami said, came there and he said, no, this is a palace for Jagannath. Before Jagannath took me out and said, your temple is very dirty. I did that. Yeah. And tomorrow, the temple's going to be. Yeah. They're going to Okay. 21st. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Indore Gopi Janavallabha Indore Yasodanandana Vraja Jana Vanchana Yasodanandana Vraja Jana Vanchana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jayom Vishnu Paraparamahamsa Pavakacharya Asatara Shishiman A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Paraparamahamsa Pavakacharya Asatara Shishiman Bhakti Siddhanta Saraswati Guru Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavini Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai.
Premsikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Vedi Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Samakunda Radha Kunda Giva Govindāya Ki Jai. Vṛndāvana Dhamma Ki Jai. Mathura Dhamma Ki Jai. Navadvipa Dhamma Ki Jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Oh, glorious assembled devotees. Oh, glorious assembled devotees. Oh, glorious assembled devotees. Oh, glorious to Shikara, oh, Gauranga. Oh, glorious to Srila Prabhupada, Savior of the whole world, and keep Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevāya. Om Namo Bhagavate Vasudevāya. Om Namo Bhagavate Vasudevāya. We're reading from Canto 1, Chapter 8, Text 21 today. Prayers of Queen Kuntī. So let's have a look here. kṛṣṇāya, vāsudevāya, devakī-nandanāya, nanda-gopa-kumārāya, govindāya, namo namaḥ, namo namaḥ. kṛṣṇāya vāsudevāya, devakī-nandanāya nanda-gopa-kumārāya, govindāya namo namaḥ, kṛṣṇāya vāsudevāya, devakī-nandanāya nanda-gopa-kumārāya, govindāya namo namaḥ. Boys? Very good. Pretty good for a 3-month-old one, isn't it? Yeah. Next, boys, big boys. kṛṣṇāya vāsudevāya, devakī-nandanāya nanda-gopa-kumārāya, govindāya namo namaḥ. Ladies. Would you like to try? It's a simple one. kṛṣṇāya vāsudevāya, devakī-nandanāya cha, nanda-gopa-kumārāya, govindāya namo namaḥ. Very good. Now, kṛṣṇāya, the Supreme Lord, Vasudevāya, unto the son of Vasudeva, Govindāya, unto the son of Devaki, Cha, and Nanda-gopa,
Nanda and the cowherd men, Kumārāya, unto their son, govindāya, unto the personality of Godhead who enlivens the cows and the senses. Namaḥ, respectful obeisances. Namaḥ, obeisances. Translation. Let me therefore offer my respectful obeisances unto the Lord, who has become the son of Vasudeva, the pleasure of Devaki, the boy of Nanda and the other cowherd men of Vṛndāvana, and the enlivener of the cows and the senses. अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद के लाल वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। Purport by Srila Prabhupada. The Lord, being thus unapproachable by any material assets, out of unbounded and causeless mercy, descends on the earth, and he is in order to show his special mercy upon his unalloyed devotees, and to diminish the upsurges of the demoniac persons. किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम हेतु कृपा से पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। Queen Kuntī specifically adores the incarnation of or descent of Lord Krishna above all other incarnations, because in this particular incarnation he is more approachable. महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतार की विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। In the Rama incarnation, he remained a king's son from the very childhood. But in the incarnation of Krishna, although he was the son of a king, he at once left the shelter of his real father and mother, King Vasudeva and King Devaki, just after his appearance, and went to the lap of Yasoda Mai to play the part of an ordinary cowherd boy in the blessed Vraja Bhumi, which is very sanctified because of his childhood pastimes. राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने गए, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी असली माता पिता राजा वसुदेव महारानी देवकी के संरक्षण के जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के अत्यंत पावन वृंदावन के पुण्य भूमि में समान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। Therefore, Lord Krishna is more merciful than Lord Rama. He was undoubtedly very kind to Kunti's brother Vasudeva and the family. Had he not become the son of Vasudeva and Devaki, Queen Kuntī could not claim him to be her nephew, and thus address Krishna in parental affection. Got it? कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु हैं। यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती ने अपना भतीजा मानकर वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित नहीं कर पाती। But Nanda and Yasoda are more fortunate because they could relish the Lord's childhood pastimes, which are more attractive than all other pastimes. There is no parallel to his childhood pastimes as exhibited at Vrajabhumi, which are the phototypes of his eternal affairs in the original Krishna Loka described as the Shintamini Dharma in the Brahma Samhita. किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्हें भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। ब्रज भूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है।
तो चिंतामणि धराम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में ही हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। Lord Sri Krishna descended himself at Vrajabhumi with all his transcendental entourage and paraphernalia. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore confirmed that one is as fortunate as the residents of Vrajabhumi, and specifically the cowherd girls who dedicated their everything for the satisfaction of the Lord. भगवान कृष्ण व्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों या सात सामग्री के साथ सब अवतरित हुए थे। इसीलिए भगवान महाप्रभु ने पुष्टि की है कि व्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है और उनमें गोपियां विशेष रूप से भाग्यशाली है क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति निधान कर दिया। His pastimes with Nanda and Yasoda, and his pastimes with the cowherd men, and especially with the cowherd boys and the cows, have caused him to be known as Govinda. Lord Krishna as Govinda is more inclined to the Brahmanas and the cows, indicating thereby that human prosperity depends more on these two items, namely Brahminical culture and cow protection. Lord Krishna is never satisfied where these are lacking. गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों का गौ के प्रति विशेष सदय है। इसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति के बाद दूसरी गौ रक्षा। जहाँ इन दोनों का भाव रहता है वहाँ भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, नहीं होते। Translation again. Let me therefore offer my respectful obeisances unto the Lord, who has become the son of Vasudeva, the pleasure of Devaki, the boy of Nanda, and the other cowherd men of Vraja, of Vṛndāvana, and the enlivener of the cows and the senses. Want to read it again? अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद के लाल गोविंदा के अन्य ग्वालों इन गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। So these special pastimes of Krishna with Queen Kuntī, and she's reminding us how special Krishna is. Because even when he was the child of Vasudeva and Devaki, he was only a little baby. And does anyone know what Vasudeva did with baby Krishna? तो भगवान की जो विशेष लीलाएं हैं वो कुंती महारानी और नंदेश्वर बहुत ही विशेष है। क्या आप में से किसी को पता है कि कृष्ण ने वासुदेव के साथ बचपन में क्या किया? माता जी पूछ रही हैं। Hands up. हाँ बताइए। None of you know this. This is the beginning of the Krishna book. हाँ वही। वासुदेव ने कृष्ण के साथ क्या किया? शुरू में। Yes. I want these little boys to know. Little boys. I want the boys to know. I want the boys to tell me. Who's that? Oh, that one. He's a big boy. Okay. You're all listening. I want you to listen. Very good listening and remembering. Okay. When Krishna took birth in the jail, Vasudeva took the baby Krishna, kept in the basket, he crossed the Yamuna and brought it to Nanda Mahārāja, and he replaced the Krishna with a girl baby and came back again to the jail of Kamsa. How many of you know that story? आप में से कितने लोग इस कथा को जानते हैं? Not many of the children. नहीं जानते हैं कथा को? जानते तो हाँ बताइए। Are you reading the Krishna book?
क्या आप लोग कृष्णा बुक पढ़ते हैं? How many? How many read the Krishna book? पढ़ते थे ना? You don't even have to read the big Krishna book. You can read the Krishna book for the children. आप लोगों को बड़ा कृष्णा पुस्तक है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बच्चों के लिए विशेष कृष्ण पुस्तक है वो भी पढ़ सकते हैं आप लोग। There's so many Hare Krishna children's books out there. आजकल बहुत सारी छोटे बच्चों के लिए हरे कृष्ण पुस्तकें हैं। Do you have them? अभी है दोस्तों। Oh, well, that's not good enough. So are you giving them some rupees to go down there and buy some? Oh, my. माता जी कह रहे मुझे बेटा किताब है आपके पास? मैंने बोला हाँ, नेशनल गिफ्ट में है। माता जी गुस्सा करके बोल रही है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या बच्चों को पैसे देते हो खरीद के लाने के लिए वहाँ पे? आपको देना चाहिए। तो अभी हम आपको बुक प्रोवाइड करेंगे, विल प्रोवाइड देम। You there? Every day before you go to bed, you should hear a Krishna story. हर दिन सोने से पहले दूध के साथ हम भगवान कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करेंगे अभी से। So you can remember. You remember, give me that bead bag. I haven't met you before. Dirty and ripped. My bead bag now. So it's very important that when you go to sleep, if you all can't sit together, a few of you can sit and do it. You can have 2-3 groups, and you've got to remember these Krishna stories, because our life is Krishna, isn't it? We're singing every day, Hare Krishna. I mean, we don't know who he is and what he does and how he plays and how cheeky he is and how many demons he kills. What are we doing? ये बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग भगवान कृष्ण की मधुर कथाओं को ज़रा सोने से पहले श्रवण करें। तो बताइए कृष्णा हमारे प्राण है, हमारे सब कुछ है। हम सुबह डेली हरे कृष्णा मंत्र जब भी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कृष्ण कौन है उनकी कथाओं के माध्यम से। Very important. बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Remember what I told you the other day? Always remember Krishna and never forget him. इसीलिए मैं दूसरे दिन बता रही थी आप सबको कि हमेशा भगवान को स्मरण रखिए और कभी मत भूलिए। But if you never read anything about him and remember him, how are you going to always remember Krishna and never forget him? अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं भगवान कृष्ण लीलाओं को, तो बताइए आप लोग कैसे भगवान को हमेशा स्मरण रख पाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे? So when I come back next time, you're all going to know some of the Krishna stories. तो अगली बार मेरे आने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग भगवान कृष्ण की लीलाओं को जानें। What about the big ones? How many do you know? The big ones? आप बड़े जो भक्त लोग हैं वो क्या वो लोग कृष्ण को पढ़ते हैं, पढ़े हैं? What about the brahmacharis and the vaidis? You know many? You read it. But how many do you remember? You remember that story I told you the other day about Krishna stealing the butter? Yeah. And he had his hands behind his back, and then Mother Yasoda and Balaram came, and they said, Krishna, what are you doing? And he went like that. I said, nothing. And they said, have you got some butter? He said, no. He did it. Not me, he. See, even if you want to use the technology, you can use the Little Krishna site or the Krishna story on the technology. You have no excuse, right? No excuse not to know who Krishna is, not to know all his pastimes. Even in Mayapur, they have a playground, a Krishna playground with an Agachura demon. Translate. तो मैं चाह रही थी कि आप बड़े प्रभु जी लोग मेरे बच्चे वो भी कृष्ण कथा को इसलिए मैंने आप लोग को याद है कुछ दिन पहले ये स्टोरी बताई थी जब कृष्ण छोटे बच्चे थे कैसे माखन चोरी कर रहे थे। एक बार कृष्ण भैया और बलराम जी पीछे से देख रहे थे और माखन चुरा लिए थे, पकड़े गए। जब पकड़े गए मुंह में लगा हुआ था तो
जीप से उन्होंने छिपा लिया और हाथ पैसे कर लिया। और बाद में क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम? बोले मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने नहीं खाया। ये प्रतिबिंब को बताते हुए कहते ये कृष्णा इन्होंने खाया। Do you take them on pilgrimage sometimes? क्या आप लोग यात्रा में जाते हैं? To Vṛndāvana? Now we are going to go to Vṛndāvana, so no. Yeah, soon. Kartik. So when you're in Vṛndāvana, every day they're going to take you to a new place. But actually this place where our temple is built, it's called Ramanreti. आप जब वृंदावन जाएंगे तो हर दिन आपको नए नए जगहों पर ले जाया जाएगा। और आपको पता हो कि जहाँ अपना इस्कॉन मंदिर है, वो जो एरिया है, वो जो क्षेत्र है, उसका नाम है रमन रेती। And when I went there 50 years ago, there was only just our temple, just getting built, and there was nothing around it. Just maybe some little sadhus' huts. जब मैं बहुत समय पहले, ऑलमोस्ट 50 वर्ष पहले वृंदावन गई थी, तो रमन रेती जहाँ पे अपना भी मंदिर है, वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपना मंदिर था जो भी निर्माणाधीन था, बन रहा था, और उसके बाद छोटे छोटे साधु संतों के कुछ हट्स थे, झोपड़ी थे। I loved it there then. It was so nice, so quiet. उस समय बहुत ही मधुर और प्रिय था, क्योंकि ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं था उस हिसाब से। If you had to go down to Loy Bazaar, you could go on the rickshaw and you'd be there in 10 minutes. But now, oh my God. उस समय आपको कहीं भी जाना होता तो बहुत जल्दी पहुंच जाते थे, चाहे आप लोई बाजार हो चाहे कहीं, लेकिन आजकल तो अगर जाना है तो बहुत भीड़ रहती है। So that's what Queen Kuntī is talking about, that Krishna that performed all those beautiful pastimes, so we can remember him. तो वही कथाओं के बारे में कुंती मुनि कह रहे हैं, हमें सब जानना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि हम लोग भगवान कृष्ण को सही रूप से स्मरण कर सकें। And Krishna picked up a big hill. What was the name of that hill? माता जी आप सभी से पूछ रही हैं कि जब कृष्णा छोटे बच्चे थे तो उन्होंने बहुत बड़े पहाड़ को, पर्वत को अपने हाथ में उठाया, तो उसका नाम क्या है, किसको पता है? The boy that's only been here for 3 months, he already knows the answer. Do you? What is it? Ah, you've been reading the Krishna book. Very good. And how did he pick up that hill? Not you. How did he pick up the hill? कैसे उठाया उन्होंने उस पर्वत को? On that little finger there. Yeah. Wow, I'm glad you know that one. Could you imagine picking up a hill with your little finger? I think your little finger would break, wouldn't it? See, that's how special Krishna is. No one knows him. तो आपको लगता नहीं कि छोटा, इतने छोटे उंगली पे भगवान उठाएंगे तो उंगली टूट जाएगी? कृष्णा इसलिए बहुत स्पेशल है, बहुत विशेष है। No one knows him. They don't know what he can do. They just see this little boy. And when Krishna came, people didn't even know who he was. भगवान कृष्ण जब आए थे तो बहुत से लोग जानते भी नहीं थे कि वो कौन है। Because to see Krishna is only for the very special souls. क्योंकि भगवान कृष्ण को देखने के लिए सिर्फ बहुत जो विशेष भक्त हैं, आत्माएं हैं, वही देख सकते हैं भगवान को। And you have to know Krishna. You cannot knock on the rich man's door, or the Prime Minister of Australia, the Prime Minister of India, what do they call him in America? In America, what do they call him? President. You can't go and knock on his door and go, "Hey, Mr. President, I want to see you." Or, "Mr. Prime Minister, I want to see you." They say, "Who are you? You cannot come here to see the Prime Minister. You have to have an invite, or you have to have done something really wonderful." Right? So it's the same with Krishna. Not everyone can see Krishna. Not the wild man down the street. He's always killing the animals and eating them. He's not going to get to see Krishna. Right? माता जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण को हर कोई नहीं देख सकता है, हर कोई नहीं जान सकता है,
जैसे कि एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री को मिलने के लिए आप ऐसे नहीं सीधे उठ के मुंह उठा के चले जाएंगे, उनको दरवाजा खटखटाएंगे, चलो तो बोले क्यों, आप कौन हो, आपसे मैं क्यों मिले, कुछ पात्रता होनी चाहिए, या तो आप बहुत विशेष व्यक्ति हो या आपने कोई विशेष कार्य किया हो, तभी आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिल सकते हैं। उसी प्रकार से ऐसा नहीं कि आप रोड में गली में आप जानवर को मारते हो, जानवर को खाते हो, ऐसे नीच प्रकार के कार्य करते हो और आप भगवान कृष्ण को देख सकते हो, उनसे मिल सकते हो, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। Only the very special people, just like the Prime Minister. Only special people go to see him. Someone who's done something great for the country of England or the country of India. He will say, I want to see that person, right? So the same with Krishna. He's watching all, seeing what we're doing, and he's saying, that one I want to see. तो महाराज जी कह रहे कि उसी प्रकार से जैसे कि आप किसी नॉर्मल किसी भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आपको विशेष होना होगा, विशेष कार्य का प्रदर्शन करना होगा, तभी आप मिल सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान से मिलने के लिए भी आपको कुछ विशेष करना होगा, राइट, तभी आप भगवान से मिलने की पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तो भगवान खुद से कहेंगे मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ, आप जो विशेष करेंगे उनको। The Prime Minister hasn't got a book written about him like Krishna has. Krishna's got so many books. He's written all about him. And our Srila Prabhupada, our dear sweet Srila Prabhupada, for the last 12 years of his life, he sat there and he wrote those books, right? And he wrote them for us. And he said, you're going out on the street and you're distributing these books, but how many have read these books? Oh, and everybody's going, oh, didn't read them yet. So, प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कुछ आपको बुक नॉर्मल नहीं प्राय नहीं प्राप्त होगा, लेकिन भगवान कृष्ण में अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं जो उनको गुणों का व्याख्यान कर रही हैं, है ना। तो पाद जी ने अपने जीवन के 12 साल में बहुत सारी पुस्तकों को ऐसे लिखा है जिससे हम कृष्ण के बारे में जान सकते हैं, इसलिए कभी कभी प्रभुपाद जी कहा करते थे ये जो पुस्तक मैंने लिखी है आप में से कितने लोगों ने अच्छे प्रकार से पढ़ा है, तो डिवोटी जो नहीं पढ़ रहे थे इसलिए मुझे कहते थे प्रभुपाद जी की किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, because he said, you have to read these books every day, because actually the answer to the problems of life in these books. Many times devotees, they call me or talk to me, oh, do you know the answer to this? I said, yes, it's in Srila Prabhupada's books. हमारे जीवन के जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान जो है प्रभुपाद जी किताबों में दिया हुआ है। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप किताब प्रभुपाद जी की पढ़ें। बहुत बार बहुत से लोग अप्रोच करते हैं माता जी को, ऐसे भक्तों को पूछते हैं मेरे जीवन में ये समस्या चल रही है, क्या इसका आप आंसर बताएंगे? माता जी कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ इसका समाधान किधर है, इसका समाधान आपको प्रभुपाद जी किताबों में मिलेगा, इसलिए प्रभुपाद जी किताब पढ़िए। There was one person, he came to see Bhaktisiddhanta Saraswati, and he said to Bhaktisiddhanta Saraswati, Maharaj, I have a question. Please, could you answer my question? एक व्यक्ति थे जो भक्ति सिद्धांत के पास जाते हैं और महाराज जी हमें आपसे कुछ प्रश्न पूछना है, क्या आप जवाब देंगे? He said, and Bhaktisiddhanta Saraswati Guru Maharaj said, look, I'd love to answer your question, but today we have all these people missing in the kitchen. Please, can you go and help? And the man said, yes, okay, I'll go and help. So he helped all day. तो जो भक्ति सिद्धांत से ठाकुर महाराज जी को पूछने के लिए प्रश्न गए थे, तो महाराज जी ने कहा उनको देखिए हाँ मैं आपको प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन क्या हुआ है कि आज किचन में बहुत से भक्त नहीं आए हैं, तो आप थोड़ा किचन में जाके मदद करेंगे? और दिन भर जाकर किचन में सेवा किया उन्होंने। So the next day he came back again, and he said, dear Maharaj, please, do you have time to answer my question today? दूसरे दिन क्योंकि पहले दिन सेवा में चला गया, तो दूसरे दिन फिर से व्यक्ति आते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास और पूछते हैं कि क्या आज आपके पास समय है, क्या आप आज मेरे प्रश्न का जवाब दे सकेंगे, दे पाएंगे?
And he said, oh, I'm really sorry. He said, something has happened in the kitchen again today. Do you mind going in there and helping out? फिर से भक्तजनों को कहते हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन आज फिर से किचन में कुछ ऐसे गड़बड़ हुआ है कि हमें भक्तों की नीड है, तो क्या आपको आप बुरा नहीं मानेंगे? अगर बुरा नहीं माने तो क्या आज फिर से आप किचन में जा सकते हैं? And he said, went back the next day, and Bhaktisiddhanta Guru Maharaj, he called him over and he said, I have time today to answer your question. The same day or next day? Next day. तो अगले दिन भक्तजन उनको बुलाते हैं, तो कहते हैं हाँ आज मेरे पास समय है, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, आइए. And the man said, no, you don't have to worry. While I was doing service, the answer came to me. तो व्यक्ति जो सेवा कर रहे थे किचन में, उन्होंने कहा, जब महाराज ने कहा कि आप आइए मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, तो कहते नहीं, जब मैं सेवा कर रहा था तो सेवा करने के समय मुझे उन प्रश्नों के जवाब स्वयं ही प्राप्त हो गए. So, if you do night service and you're going to get a grand opportunity tomorrow is one of the special days of the year. What day is it going to be tomorrow? कल एक बहुत विशेष दिन है और बहुत ही विशेष दिन होने वाला है. आपको पता है वो कौन सा दिन है, क्या है कल स्पेशल? What? Yes. And what's Gundicha? गुंडीचा का मतलब क्या होता है? What is it? क्या है वो? Is it a hill? Is it a worm? Is it a dog? What is it? It's what? Temple. It's a temple. There's a Gundicha temple somewhere? Are we going there tomorrow? No. So what is this Gundicha? Temple, Gundicha temple. And what do you do there? Stand on your head, do some yoga exercises. What are we going to do on this Gundicha temple day? गुंडीचा का जो दिन है, उस दिन क्या करने वाले हैं मंदिर में? You're going to clean. Oh, fantastic. Clean the temple, clean your heart. That's right. So tomorrow is the greatest opportunity to clean your heart. And then you will be able to read Prabhupada's books and remember all the stories, all the pastimes. कल एक सुनहरा दिन है आपको अपने हृदय को स्वच्छ करने के लिए, क्लीन करने के लिए. अगर आप अच्छे प्रकार से सेवा करेंगे कल के गुंडीचा महाराजन में, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा. और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, गोपाल जी किताब पढ़ेंगे तो अच्छे प्रकार से वो शिक्षाएं हैं आपके हृदय को लगेंगी और आप शुद्ध हो जाएंगे. So tomorrow, everyone's going to get their cleaning clothes on, not their dhotis. Going to put their shorts on and their raggedy t-shirt, and they're going to get their brooms and their cloths and the detergents, and we're going to clean this place like never before. कल सभी लोग विशेष प्रकार का ड्रेस पहन लेंगे. ऐसा नहीं कि धोती पहन तो गंदा हो जाएगा. अच्छे दूसरी ड्रेस पहन करके और झाड़ू और सब जो अलग सफाई के जो हथियार हैं जो उनको लेकर के सभी लोग क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे और इस मंदिर को इतना स्वच्छ बना देंगे जो पहले कभी नहीं था. And guess what? 20 devotees from, what's it called over there? गौरवाणी क्लब. Yeah. प्रभुपाद स्वामी महाराज ग्रुप. गौरवाणी क्लब. Oh, the Gauravani Club. 20 devotees are coming from the Gauravani Club to clean. कल संडे को क्लास में गई थी, एक जगह और एक प्रवचन का कार्यक्रम कर रहे थे. माता जी ने उनको इंस्पायर किया कि इंदौर में ये टेम्पल है, तो ये आपका टेम्पल है, आपको आना चाहिए और उसको क्लीन करना चाहिए. तो दामोदर विलास प्रभु जो ग्रुप के हैं, उन्होंने कहा कि हम 20 भक्तों को ला करके कल टेम्पल हॉल क्लीनिंग करेंगे. And the place is going to be shining. I go to temples all the time and get them to clean their temples. Because your temple's not the only temple that's not clean. There's others as well. But you know what? They listen to me.
Every year I came there for 5 years, getting them to clean their temple. And then one day, first of all, Jayapataka Maharaj came there and they told me, wow, Jayapataka Maharaj told us our temple is very dirty. And then after 4 years, I think it was, they came to me and they said, guess what? Radhanath Swami came and he told us we have a palace for Jagannath, Subhadra and Baladev. You see? दादाजी कह रहे कि ऐसा नहीं है, स्वच्छता का ध्यान और यहाँ कम दिया जाता है और दूसरे भी मंदिर है जहाँ पर स्वच्छता का ध्यान थोड़ा कम देते हैं। तो मैं वहाँ इन जगहों पे जाती हूँ। एक ऐसा ही मंदिर था साउथ इंडिया में जहाँ पर थी, तो वहाँ पर भी अच्छे से साफ सफाई नहीं थी। तो मैंने एक बार जब तक महाराज वहाँ आए तो महाराज ने भी बोला कि मंदिर साफ इतना नहीं है। और हर बार मैं जाती थी, उनको इंस्पायर करती थी। 5 साल बाद उनमें से एक भक्त आते हैं और पता है माता जी क्या हुआ, राधानाथ महाराज आए थे, उन्होंने कहा आपका मंदिर बहुत स्वच्छ है। तो it was a very good news for us. But that was only a rented temple. So the devotees, they decided, stay here in Shishadripuram. They built another temple some kilometers away. And they said to the devotees in Shishadripuram, you come and live here at the new temple. They said, no, we don't want to leave. We've been here so long, and our children are going to school. We've rented the house, we have a contract, we bought the house. No, we are staying here. And what they did, there was a piece of land behind that temple, because that was only rented. It was just a shed, and it was only rented. And at the back of the temple, there was some land for sale. And all the devotees that stayed there, they put their money together and they bought that land. तो जब वो जो मंदिर जब था, तो जो मंदिर की बात करें वो रेंटेड था, वो किराए का था। तो बहुत समय हो गया, तो भक्तों ने कहीं दूर पे जाके मंदिर लिया, जगह लिया, तो हुआ कि वहाँ पे ट्रांसफर होना है। भक्तों नहीं, हम नहीं वहाँ जाएंगे, हम स्थान तो नहीं होंगे वहाँ पे, हम यहीं पे। माता जी कह रही वहीं पास एक पीछे एक लैंड खाली था, तो भक्तों ने मिल करके वहाँ पर फिर से मंदिर बनाया और फिर वहीं पे भगवान को स्थानांतरित किया। And there's a big rock there. And they had to chisel the rock for 2 years until there was no rock there anymore and they could build their temple. वहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर था और लगभग 2 साल लगे उस पत्थर को छीलने के लिए, काटने के लिए। जब तक वो क्लीन नहीं हुआ, हटा नहीं हुआ, तब तक वो मंदिर नहीं बना। फिर 2 साल बाद वहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। The first thing they did was they built a guest house. पहला चीज उन्होंने जो किया था वो एक भक्तों के रहने के लिए एक निवास स्थान बनाया था, खास करके अतिथि जनों के लिए रहने के लिए स्थान बनाया था। Not just a small guest house, many rooms. 1 floor, 2 floor, 3 floor, 4th floor. छोटा सा अतिथि गृह नहीं बनाया था उन्होंने, वो बहुत बड़ा अतिथि निवास बनाया था, जिसमें पहला तल था, दूसरा तल था, तीसरा तल था, 3 stories। And then they sold the rooms उसके बाद जो उन्होंने रूम बनाए थे उनको उन्होंने बेच दिया to the devotees, to the well-wishers. And they made enough money to build their temple. और उस लक्ष्मी का उपयोग करके उन्होंने मंदिर Yeah, का you've निर्माण seen कार्य it? शुरू किया। It's in Shishadripuram. जैसे सादरीपुरम में है साउथ इंडिया में। They have a very nice place. They haven't built the top floor, which is the main temple. They're starting that. When I went there last year. अभी तक मंदिर पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो बना रहे हैं, लास्ट फ्लोर बना बाकी है, बट धीरे-धीरे उसको बना रहे हैं। See what you can do? It doesn't take many men. It just takes many brains. देखिए आप सब कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं सब लोग मिलकर के। ऐसा नहीं है कि बहुत बनी चाहिए, बट आपको बहुत लोगों का साथ चाहिए, सब लोग साथ नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत लोग चाहिए, बहुत अच्छे ब्रेन चाहिए जिससे आप ऐसा कर पाएंगे। So we have to build our brain, and by reading these beautiful books, following the program, rise early before 4 a.m. or earlier if you can, chant your rounds, follow the whole morning program, and your whole life will be auspicious. Yes. ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, हम लोग
अपने ब्रेन को मस्तिष्क को बहुत सुंदर बना सकते हैं। कैसे? हमें रोजाना सुबह जल्दी उठना है, प्रभुपाद जी ने जो निर्धारित किया है मौलिक को अच्छे से पालन करना है, और ऐसा करके हमारा पूरा जीवन इसको पालन करेंगे तो हमारा जीवन अद्भुत होगा। You can do amazing things with the right consciousness. In London, they have a small temple at Soho, but the people know the devotees so well on the street. The brahmacharis go out every day distributing books, and everyone takes a book because they all know us. So now we have lots of money, we have a restaurant, and the people are lining up down the street to go to our restaurant. It's only a small restaurant, right? अगर उचित चेतना रहेगी तो हम बहुत सारा सेवा कर सकते हैं। हम अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में माता जी बता रहे हैं कि कहीं तो मंदिर है तो वहाँ पर भक्त लोग बहुत अच्छे प्रकार से मौलिक का पालन करते हैं, और जब वो रोड पे जाते हैं तो सब लोग लेते हैं बुक उनसे, तो चेतना उनकी बहुत अच्छी रहती है। And then we have the Bhakti-vedanta out there. Nanda Mahārāja, he was telling stories. We were at the 50th anniversary, 2023. And he was telling, George Harrison gave us this beautiful property, the Bhakti-vedanta Mana. And all of the brahmacharis, they think, oh, this is so wonderful, and they're living there. They're not thinking at all about keeping it clean. It reminds me of my grandson. He comes home from school, he throws his bag on the ground, he climbs up in the cupboard, he gets some drinks and he gets some snacks, he lies on the couch, he turns on the TV and he eats the snacks. When it's finished, he throws it on the ground, then drinks, and then opens another snack and throws it on the ground. Because he thinks, I said, hey, what are you doing? Are you going to clean up your mess? Oh, no. Mother's there. Why should I clean up my mess? Mother is there. So they are thinking, oh, George Harrison has so much money. He gave us this mana, and we would just live here in a mess. And one day, he came for a visit, and he seen the mess. And he said, oh, so this is what you've done with my gift that I've given you. Well, I think I'm going to take it back. भक्ति वेदांत में 2023 में उसका 50 साल हुआ। महाराज नगरंदर बता रहे थे कि जब जॉर्ज हेरिसन ने दिया था तो ब्रह्मचारी ने उसको लिया। ब्रह्मचारी ने लिया तो थोड़ा उसको गारंटेड पे ले लिया, इन द सेंस कि अब तो आ गया है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मंदिर को स्वच्छ नहीं रख रहे थे, क्लीन नहीं रख रहे थे। तो ये ऐसा जैसे माता जी फिर एग्जाम्पल दिया कि उनका जो होता है वो भी ऐसा ही करता है। स्कूल से आते हैं के बाद फेंक देना है, फिर जाकर के जूस निकाल लेना है, ड्रेस इधर उधर रख देना है, जूता इधर उधर रख देना है। तो कि नहीं, माता जी कहीं बोली है ये कौन साफ करेगा, इतना गंदा तुमने फैला दिया। बोलते कौन करेगा भाई, मम्मी करेगी और कौन करेगा, ऐसा वो उनका उदा बोलता है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मचारी को भी लगता है कि जॉर्ज हेरिसन ने इतना अच्छा मंदिर दिया है, वहीं साफ करवाएंगे, हमको कराएंगे। तो एक बार क्या होता है, जॉर्ज हेरिसन आते हैं, जॉर्ज हेरिसन आते देखते मंदिर बहुत अस्वच्छ है, बोलते मैंने आपको इतना सुंदर गिफ्ट दिया, बाहर गया आपने मंदिर इतना गंदा रखा है, मैं आपसे मंदिर वापस ले लूँगा। तो सब लोग So the devotees, all of a sudden, they became serious. And they started cleaning the place and making gardens and everything. And then George came for another visit. He went, all right then. I think you're serious now. तो बाद में जब भक्तों ने देखा कि जॉर्ज हेरिसन लेने की बात कर रहे हैं तो सभी ब्रह्मचारी और भक्त बहुत गंभीर हो गए, और उन्होंने अच्छी प्रकार से सफाई करी, बहुत अच्छे गार्डन बनाए वहाँ पे, और बहुत स्वच्छ रखा मंदिर को। तो अगली बार जब जॉर्ज हेरिसन आए थे उन्होंने देखा ओके भक्तों का भी मंदिर को अच्छे से रख रहे हैं, साफ सुथरा रख रहे हैं, तो ठीक है अभी आप लोग भगवान आप लोग यहाँ रह सकते हैं और अच्छे प्रकार से सेवा कर सकते हैं। It's a very, very successful place. London is successful. All our preaching in England is very successful. Bhaktivedanta Mani is so successful. Thousands of people come there. On Janmashtami, 50,000 people come to Bhaktivedanta Mana on Janmashtami. 50,000. भक्तिवेदांत में जो मंदिर है बहुत ही सफल मंदिरों में से है, और इतना अच्छा वहाँ पर माहौल है कि वहाँ पर हर साल जन्माष्टमी में लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग दर्शन करने के लिए आते हैं भगवान का। So it started with the wrong consciousness.
then the consciousness changed. Then the whole atmosphere, the whole place changed. Now it's a palace. Now it is such a gem. So, you see, if you clean this place, spotless, the gopis are cleaning the place even when it's clean. They're cleaning it, right? So clean that you can eat off the floor. तो माता जी कह रही है कि जो जिस प्रकार से मैनर का मंदिर इतना सुंदर है और एक रत्न के समान है, आप भी इस मंदिर को बना सकते हैं। हमें भी मिलकर के इस मंदिर को ऐसे साफ रखना चाहिए, इतना साफ रखना चाहिए कि कुछ फ्लोर पर गिरा हो तो उसको उठा करके खा सकें। Right? He knows me. Chuda Gopal knows me very well. Even I ring him on the phone and I said, how's the cleaning going? I've been here quite a few times. So माता जी थोड़ा इधर कम क्लीनिंग ऊपर बोला जब पिछली बार आई थी तो लोग तो बिल्कुल फीडबैक इसके पास है, चलो दिखाओ फीडबैक। जैसे फीडबैक है माता जी ने अभी पिछली बार जब आई थी तो बच्चों का फीडबैक साफ नहीं था, माता जी ने सारे बच्चों को फीडबैक स्पॉन्सर किया, बोला ऐसे फीडबैक नहीं होनी चाहिए। और हमारे फीडबैक भी थे, बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, रेगुलरली क्लीन करनी चाहिए। हमें खुद महाराज इसमें जब करते बहुत स्वच्छ होना चाहिए, जहाँ पर रहते हो एरिया स्वच्छ होना चाहिए। तो माता जी स्वच्छ बहुत विशेष ध्यान देती हैं। और बीच बीच में जब यहाँ से चली जाती तो भी मुझे फोन करके पूछती हैं स्वच्छता कैसा है, तो ठीक है मंदिर ऐसे करके। एक बार गोविंदा में गई, बोलते इतना धरती में कभी गोविंदा में नहीं होंगी, ऐसा करके तो फिर हमने भी साफ किया। तो माता जी बहुत विशेष ध्यान देती हैं। First of all, Prabhupada used to say, cleanliness is godliness. And then he changed it. He said, cleanliness is next to godliness. And then after some time, he changed it. He said, cleanliness is godliness. तो बात पहले कहा कहते थे कि भगवत्ता से जो स्वच्छता है भगवत्ता से एक कदम पीछे है इस प्रकार से, लेकिन अगली बार कहा कि नहीं, स्वच्छ रहना ही भगवत भक्ति है एक तरह से। So tomorrow we're going to clean this place like it's going to be shining. And when Jagannath, Subhadra, Baladev come out from their rest, they're going to go, look Balaram, look Subhadra, is this where we lived before? It looks like it's a whole new place. What has happened here? कल हम लोग बहुत अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग करने वाले हैं। जब ट्रेनिंग होगा उस टाइम में टीचर जगन्नाथ सोच रहा है अपने दर्शन प्लग खोलेंगे, बोलेंगे क्या ये वही स्थान है जहाँ हम पहले रहते थे, कितना साफ होना चाहिए। And the people will be coming with their big sacks of gold and dropping it in front of the altar. And then the temple will go up so quick. Next time I come, there'll be a new temple. Woo! अगर मंदिर स्वच्छ रहेगा, सब कुछ एकदम स्वच्छ रहेगी तो बहुत से लोग आएंगे, अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे। अगली बार जब हम आएंगे तो बहुत सुंदर अपना मंदिर बन चुका होगा। Just like Sudama, when he went home, he couldn't even recognize his house. He was going there and going, what's this? What's this? Because Krishna gave him a piece of chipped rice. He gave Krishna a piece of that chipped rice to eat. And then he went home in his rags, thinking, oh, that was so wonderful. He was just so happy that he met Krishna and he could have that time with him. But Krishna, he had a whole plan. When he went home, he went, what is this? Why are all these palaces here? Oh my God. And then his wife came out and she's looking so radiant and so beautiful. And he looked and he went, oh, this is all because of my friend Krishna. And he never let it go to his head. He never thought, I have all these riches now, I will go down to the bottle shop and get some alcohol and have fun and throw a big party. No, he found this hill with a tree and he sat on it and he just preached to everyone all about how wonderful Krishna was. You see? कृष्ण सुदामा की लीला को बता रही हैं, करें कि सुदामा भगवान के पास जाते हैं मिलने के लिए, तो बस उनको भगवान की भक्ति उनसे मिलने के लिए जाते हैं, किसी अपेक्षा से नहीं जाते हैं। वहाँ जाते हैं, मिलते हैं, उनको चिप्ट राइस जो उनके पास नहीं था भिक्षा ला करके भगवान को देते हैं और वो बस उनको मिलने की
इस कृतज्ञता को ग्रेटफुलनेस को लेकर के आ जाते हैं। उन्हें मन में ऐसा नहीं था कि हमें कुछ बड़ा महल नहीं है, जैसे आते हैं अपने घर तो देखते हैं इतना सुंदर बड़ा महल बन गया है। तो सरप्राइज हो जाकर उनकी पत्नी भी पहचान में नहीं आ रही थी, वो भी बहुत सुंदर आभूषण पहने थी, उन्हें तेज चमक रहा था, है ना। लेकिन इसके बावजूद भी सुदामा को देखेंगे इतना कुछ मिलने के बाद भी, बहुत पैसा आने के बाद भी उनके सिर में नहीं गया, उनको अहंकार नहीं आया। वो क्या करते हैं, उसी पास में एक पर्वत के पास एक नीचे जा करके वहाँ पर वो सबको कृष्ण कथा करा करते हैं। वो उनके सिर में नहीं गया, सबको पचारों कृष्ण के बारे में बताया करते थे। So Mahaman Prabhu, he cannot build that temple by himself. So I think that's why Krishna sent me here, to get you guys moving. हर चीज महाराज जी हमको नहीं बोलेंगे शायद, इसलिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा कि मैं आप लोग के पीछे लगकर ये सब काम करवाऊंगी। Okay, so you have to have a higher consciousness, a higher consciousness. When there's a mess, you clean it. Don't just walk past it and think that the man's going to clean it. In the old days in the temple, we did everything. We didn't employ the cleaner. We did everything. In the morning, after we had breakfast prasadam, we didn't go upstairs and sleep. No, we got the brooms out, we got the rags out, and we cleaned the temple. And we only lived in a factory, a little yellow factory. Yellow on the outside, yellow on the inside. हमारे समय में ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत सारे काम करने वाले लोग थे जो ये साफ सफाई किया करते थे। हम लोग प्रसाद देने लोग खुद से सारे मैट क्लीनिंग करना खुद से करते थे। ऐसा नहीं कि क्लास हो गया, प्रोग्राम हो गया, खाना खा लिया, जाके ऊपर सो गए, ऐसा हम नहीं करते थे। हम लोग खुद से क्लीनिंग करते थे, है ना। ऐसा नहीं कि सब जगह गंदगी ऐसी चीजें, तो स्वच्छता हमें स्वच्छ रखना चाहिए आसपास। And the cow just mooed, so that means confirmed she's telling you the right thing. So you've got to remember, this is, she said it again, this is your home, right? This is your home. You've got to make 3 times, confirmed. So you have to make this home into the most beautiful place. It's your home, but actually it's Krishna's home. And if you don't appreciate what Krishna is giving you, one day you'll be sitting there and you'll go, I think the grass is cleaner on the other side of the hill. I'm going over there. Okay? So, tomorrow is a wonderful day. No. Mataji can't do the cleaning because she's getting old now. I can't even get off the ground. I can walk for 10 kilometers, but I can't get off the ground. But don't worry, Mataji will be here with her whip. Any questions? No questions. That means you're going to be so enthusiastic tomorrow that by the time we finish, this place is going to be sparkling. Hare Krishna, Mataji, Pranam. Mataji, as you told earlierly,
not able to follow our superiors, our seniors, our Shiksha Guru's words because we are fighting with our anarthas. So how to deal with it? How to remember our superior words? How to make the life and soul the word of superior, correct? Keep chanting. जपा करते रहिए. Go to bed early, get up early, chant rounds before Mangalati. जल्दी उठिए. मंगलारती को पहले जपा करके उठ लीजिए. Yeah, it works. ये काम करेगा. Okay, then you have so much time. Go, oh my God, I have so much time. अगर बहुत समय बचेगा तो सोचोगे कि हमारे पास ने क्या कहा है तो आप उसको स्मरण करके फिर से भी एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे. There's two of the biggest diseases in the Kali Yuga, and this time, and it's getting worse. One is L-A-Z-Y. इस कलयुग का दो सबसे बड़े रोग हैं, एक कमजोरी है. पहला है लेजीनेस, लेजी, हम सुस्त हैं. Everyone is so lazy. सभी लोग बहुत आलस रखते हैं. And the other one is no time, no time, no time. और कहते रहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है. And that's why that's why the world is like that. No one has any time, and everyone's lazy. And then they're getting all these diseases, because when you're lazy, then you go to the takeout, right? Oh, I don't have time to cook. Then you go to the takeout, the man in the takeout, the consciousness is terrible. He's frying everything, right? Ah. तो जब आप लोग ऐसे सुस्त रहेंगे तो आप क्या करेंगे? खाना खाने के लिए आप खुद से नहीं बनाएंगे, मंदिर में नहीं बनाएंगे, आप बाहर से फास्ट फूड ऐसे कुछ खाना लेकर आएंगे जो हेवी रहेगा, डीप फ्राइड रहेगा, तला हुआ रहेगा, अच्छे मटेरियल यूज नहीं हो रहेंगे, या सब लोग बीमार होंगे, है ना? We have to be conscious, and conscious means not to be lazy. हमें ये ध्यान रखना है कि हमें आलस नहीं रखना है. And then we'll have all the time in the world. आपको बहुत सारा समय रहेगा अगर आप आलस नहीं करेंगे तो आपकी चेतना अच्छी रखेंगे. जब हम खुद से माता जी पिछले से बोलते बोल रही थी, यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉन्शियसनेस. हमें अपनी चेतना के ऊपर कार्य करना होगा, उसे अपलिफ्ट करना होगा. सभी चीज़ें प्लेस पे आ जाएंगी. For years now, the devotees have been asking me for my blessings. I've been giving it. But just recently, I've made a rule. They say, can I have your blessings? I said, yes. What time do you go to bed in the night? I said it in Pune. There was only 3 devotees out of that whole temple of nearly 100 devotees that went to bed by 9 o'clock. बहुत से भक्त लोग होते हैं मेरे पास आते हैं, कहते हैं माता जी आशीर्वाद दीजिए. माता जी कहते हैं हाँ मैं आशीर्वाद दूंगी, लेकिन मैं कुछ भी नियम बनाए हैं. हाँ, और ऐसा करते करते माता जी पूछे कि आप में से कितने लोग हैं जो रात में 9 बजे सो जाते हैं? 100 से ज़्यादा भक्तों का समूह था, उसमें केवल 3 लोग जो थे जो रात में 9 बजे सो जाते हैं. 9 o'clock, good, right? You can get up early before Mangalati. Get up by 3. Then you can have a shower by 3:30. Brahmacharis don't take too long. If you don't take too long to have a shower, I'm getting old, I take a bit time now. But I'm still chanting by 3 o'clock. And so if you can be chanting by 3:30, if you get up at 3, you can be chanting by 3:30. And then you can get 8-10 rounds done before Mangalati. 8 rounds at least, you know? And you'll be amazed. Your consciousness is on a higher level. रात में जल्दी सोकर के हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करके 7 बजे तक बैठ जाते हैं, जपा करते हैं. मंगलारती में पहले 8 घंटा लगभग जब आपका हो जाता है, आपकी चेतना तो आगे बढ़ जाती है. वेरी नाइस, बहुत अच्छी चेतना रहेगी आपको दिन भर पे. तो इसीलिए रात में जल्दी सोना, मंगलारती के पहले कुछ माला करना काफ़ी अच्छा रहेगा. And the ones that said they go to bed at 10 o'clock, I said, oh, maybe. The ones that said they go to bed at 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, these are devotees. And I said, well, you come back when you get up at 9 o'clock. So out of those 100 devotees, only 2 or 3, 2 of them got my blessings.
महाराज जी कह सभी लोग आशीर्वाद के लिए लाइन में थे। एक ने कहा जो रात में 9 बजे सोता है उन्हीं को आशीर्वाद मिलेगा, जो लेट सोते हैं उनको नहीं मिलेगा। And my blessings is, may you get up before Mangalati and chant some rounds. They'll be your best ones. Then all these problems will run away. मेरा आशीर्वाद यही था कि सुबह में जल्दी, रात में जल्दी सोइए, सुबह में जल्दी उठिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो जैसे हमारे बहुत से समस्याएं रहती हैं वो सब चले जाएंगे। So hopefully next time I go to Pune and they want my blessings, so many of them will be getting up at 3 o'clock in the morning because they अगली went. बार मैं जब पुणे जाऊंगी तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो भक्त है इस बात को समझे होंगे, और अगली बार मैं जब जाऊंगी तो बहुत से लोग मेरा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे क्योंकि लोग 9 बजे सो रहे होंगे। Okay? Yeah. Can do that. It's all about training, isn't it? Just training yourself. Gradually, 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 over the years. I just got to the point where I wanted to go on the parikram. And if I went on the parikram, and after the announcements, in Mayapur it was already 6 o'clock. Now I got a few rounds done before Mangalati, but the devotees liked me so much, when I got off the bus, they all want to come and talk to me. And on the first day I went, no, this is not going to work. You have to get up 2 o'clock in the morning before you go on the bus and have all your rounds chanted. Then when you get off the bus and they want to talk to you, you're free. You'll have all your rounds done, right? So I've been doing it for many, 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 many years. One devotee, he came up to me when I was in Mayapur. I was in the shop out the back of the Mayapur. And so, when I see a white devotee from another country, I say, hello, Prabhu, where are you from? And he said, hello, Mother Surbhi. I said, you know me? He said, oh, yes, you changed my life. And I said, how did I do that? He said, I'm from Kazakhstan. When you came to Kazakhstan, you told the classes about getting up before Mangalati and chanting rounds. He said, I'm a pujari. I never can chant my rounds. It takes me all day to chant my rounds because I have so much service. And he said, from that day that you talked about getting up before Mangalati and chanting rounds, I've been doing that. And he said, I'm chanting 16 rounds before Mangalati, and he said, my whole life has changed. I went, oh my God. I said, you don't know how much that touches my heart that you are doing that. Because you tell people things, they don't always do it, isn't it? So. माता जी जब कहीं भी जाती हैं तो वाइट स्किन मतलब कोई विदेशी दिखते हैं तो उनको पूछते हैं आप प्रभु आप कहाँ से हैं, तो प्रभु जी ने कहा कि हरे कृष्णा माता सुरभि माता जी। तो हाँ माता जी आप मुझे जानते हो? बोले हाँ मैं आपको जानता हूँ। बोले कैसे? माता जी ने पूछा उनको, तो बोले कि आप मुझे कजाकिस्तान में आई थी तो आप हमसे मिली थी, तो आपने हम सबको बोला था कि अगर हम मंगल आरती की तरह जपा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं पुजारी हूँ, तो जब मैं मंदिर में सेवा करता था तो जब बाद में करते दिन भर लग जाते थे माला करने में, लेकिन जब से मैंने आपके कहे के अनुसार सुबह में उठ करके मंगल आरती से पहले जपा करना चालू किया, मेरा दिन बहुत अच्छा जाने लगा है, क्योंकि मैं सुबह में माला कर लेता हूँ, मुझे बहुत समय रहता है बहुत सी चीज़ों को करने के लिए। Okay, that's it for today. आज के लिए इतना ही। हरि बोल। Hare Krishna. Okay, did I answer your question? Very good. So, once again, today also like to thank Mother is sharing her 50-year wisdom. So we should be very grateful, and what she's saying she has followed so many years. So we should try to take some of the all the things, but at least some of the things we take in our life will be changed. Like how she shared the story of Prabhu from Kazakhstan. So we'll also like to take some of the things which are telling Mataji, cleanliness, and chanting Hare Krishna properly, and also getting up in the morning. Once again, thank you very much on behalf of Temple. And again, like to thank Mataji by chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Thank you.
Tomorrow morning when you wake up, be very excited because we're going to have a great day. और सुबह जब आप लोग उठेंगे तो आप लोग सोचिएगा आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि हम लोग आज भगवान का मंदिर क्लीन करने वाले हैं. And then we're going to have a big surprise. उसके बाद हम लोग को दूसरा बहुत अद्भुत उपहार मिलेगा. Okay. Where's that little boy that owns his speed bag? हाँ क्या हरि बोल. What time does the shop open? No, give me. What time does your shop open? 9:30. All right, you come see me at 9:30. I'm downstairs in the little room from Mahaman on that side. I'm having prasadam there. So you come see me after. All right? Good. जय.